State level abacus competition zonal round 3 जी हाँ शकनिया बैप्टिस्ट स्कूल इन कोलैबोरेशन विद गैलेक्सी इंटरनेशनल अबैकस मेहता अबैकस के नाम से जाना जाता है। ये प्राउडली जिन्होंने होस्ट किया है स्टेट लेवल अबैकस एंड मेंटल अर्थमेटिक कंपटीशन जोनल राउंड 3 अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ प्रशांत सर एंड गोल्डा मैडम। ये इवेंट रखा गया था। स्कूल मैनेजमेंट ने बड़ा शानदार प्लेटफॉर्म दिया चिल्ड्रंस को ताकि वो शोकेस कर सके अपने टैलेंट्स को और बेनिफिट हासिल कर सके अबैकस लर्निंग के। स्कूल डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अपने कमिटमेंट और होलिस्टिक डेवलपमेंट और ऑफर करते हैं फ्री अबैकस कोर्सेज जहां पर स्टूडेंट्स को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है ताकि वो अपने कॉग्निटिव और मेंटल अर्थमेटिक स्किल्स को इंप्रूव कर सकें। पेरेंट्स जब यहाँ पर आए तो उन्होंने विटनेस किया अपने बच्चों का जो टैलेंट है परफॉर्मेंस देखते हुए और जो कंपटीशन में उनको जो एक्सप्रेशन जो मिला एक्सपोजर जो मिला वो देखते हुए उन्होंने स्कूल वालों का और बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया। स्कूल का जो स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच है एक बेंचमार्क बनाती है क्वालिटी एजुकेशन के लिए। और सभी पेरेंट्स जिन्होंने यहाँ पर आए और फुल एडवांटेज लिया उस सब के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया। और आने वाले एकेडमिक ईयर के लिए एडमिशंस ओपन अप हैं। शकीना बैप्टिस्ट स्कूल एक ट्रूली एक वेव बना रहा है ब्राइटर फ्यूचर के लिए और इनोवेटिव प्रोग्राम्स के लिए। आइए देखते हैं स्टेट लेवल अबैकस कंपटीशन के शॉर्ट हाइलाइट्स। Instructions will be given to you by Rachna ma'am. You follow the instructions. All of you have your kits and your pencil with you. Really, today parents, I want to first appreciate about your management. You all are really a wise decision that doing the admissions in this school because we have connected with all the schools of Gulbarga almost top school. Every schools we have associated and since 20 years we are into abacus. We know what is the strength and what required in abacus coaching. Patience and it's a not 3 to 4 years course. So it is not a like magic stick कि ऐसे घुमाओ और बच्चे में बदलाव दिखेगा. It needs hard work, dedication and patience. Minus 5 plus 2 plus 6 minus 7 that is Answer. 8 minus 6 plus 2 minus 3 plus 5 plus 2 minus 7 plus 8 minus 2 minus 5 plus 1 minus 2 plus 7. Answer 8. very good. My name is Madan from class 6th. I returned abacus 146 sums in 8 nimish. I got runner up 2 in Brahma Kumari. Good afternoon everyone. My name is Tanzeen from class 7th. When I did 145 sums in 8 minutes. Then I got runner up 2 in Brahma Kumari convention. I will study in 5th standard. Our abacus class will be funny and we will do the abacus book level P and we will enjoy the class. Thank you. We'd like to welcome you all to Shekinah Baptist Academy, and we'd like to thank Galaxy Abacus for this opportunity where they have teamed up with us here at our school.
We are a school with a thought and a school of difference. And our children here not only work on academics, but also the complete development of a child in co-curricular activities as well as in academics. And with tying up with Abacus, for the past 2 years, we have been able to focus on children's complete development. And the development of the child is not only on the subject of mathematics, but also to develop the child in confidence, for the child to be able to do more in life and to be able to go out into the world. This mental development that we look also brings confidence, focus in the child, which also helps the child not getting carried away with things that can attract them, but to be able to focus on studies as well as in individual life too. We thank Rachna here, who has tied up with us through Galaxy Abacus and helping us out with our children here to be able to perform and to do well in life. As a school, our main focus is to provide a complete curriculum for the child in the complete development of the child, so that when the child goes into the world, he may be able to face the difficulties and struggles through challenges, through confidence, and to be able to come up in life as better citizens. I, Rachna Mehta, Director of Galaxy International Abacus, appreciate Shekinah Baptist management because they are always focusing on children's development, the infrastructure, the class teachers and everyone, because whenever we are coming, we are praising a lot by seeing the all internal assessment for the students and all. So once again, thank you to Golda ma'am and Prashant sir, who has given this platform and associated with us. Thank you for upcoming national level. We try the best so that maximum students will participate in this competition. Thank you. Thank you, Galaxy Abacus, for such a beautiful program that has been implemented at Shekinah. We really appreciate your hard work and the commitment that you have given to us. In the last 2 years, we have seen how have children have mentally grown, matured, and how competitive that they have become. This is a great platform for them to understand and bring in the spirit of competition. And I just want to thank Rachna and Swapnil for this partnership, and we really appreciate what you do for us. Thank you. Here Swapnil Mehta, Director of Mehta Abacus Galaxy. Thank you, Prashant sir and Golda man, giving her a good opportunity to conduct a Abacus classes in your school as well as competition. It is definitely helpful for your school students in futures for competitive exams like NEET, JEE and IAS, whichever is there. They can do very excellent in that competitive exams. Okay, thank you. अबाकस का क्लास तो अभी तक फ़िलहाल बच्चों लोग का टैलेंट के हिसाब से बहुत अच्छा चल रहा है और स्कूल का मैनेजमेंट भी अच्छा है। अभी बच्चे लोग के टैलेंट के हिसाब से अबाकस बहुत अच्छा है। अबाकस इज़ मेन इम्पॉर्टेंट टू स्टूडेंट और स्कूल भी बहुत अच्छा है, नॉलेजमेंट बहुत अच्छा है और अबाकस थोड़ा बच्चों को थोड़ा डिटेल से एक बच्चों को समझाते तो भी बहुत अच्छा है और एजुकेशन का अबाकस का तो बहुत अच्छा है अभी तो फिलहाल। ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಇದೇ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ ಇದೇ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಮಗಳಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಗೆ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಜಲ್ದಿ ಬೇಗನೆ ಪಿಕಪ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಅದಾರೆ, ಮೊತ್ತ ಸರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಅದಾರೆ. ಸ್ಟಡಿ ಫುಲ್ಲರ್ ಇಲ್ಲ ಚಲೋ ಅದ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಚಲೋ ಅದಾರೆ. ಯಾವ್ದನ್ನೂ ಹಿಂಗೆ ಕೊತ್ತರೆ ಇಲ್ಲ, ಚಲೋ ಅದಾರೆ, ಚಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ.